Hey guys, hope you are doing well. Welcome to Agri SILVI. आज हम बहुत सारे इम्पोर्टेंट एनवायरमेंटल एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और ये टॉप लेवल एमसीक्यू होने वाला है। आप प्लेबैक स्पीड 1.25 और 1.5 कर दीजिए फॉर बेटर ऑडियो एक्सपीरियंस। So be attentive, be not missed. Let's start. There is no answer. The answer is in next slide. You try to answer. First read the question carefully. First question is 5 particles. देखिए बहुत सारे पार्टिकल्स जो कि लेस देन 2 to 3 माइक्रोमीटर, यहाँ से आपको पता होना चाहिए हाउ मच स्मॉल इज दिस। ओके, वेरी स्मॉल आप बोल सकते हैं, वेरी स्मॉल साइज पार्टिकल्स कैन बी इफेक्टिवली कलेक्टेड फ्रॉम इंडस्ट्रियल स्टैक्स बाय। देखिए इंडस्ट्रियल में बहुत सारे एयर पोल्यूशन होता है। देयर आर मेनी एयर पोल्यूटेंट्स यू कैन गेट फ्रॉम इंडस्ट्रियल pollutants. Okay, from this, if the particle size is less than 2 to 3 meter, means less than 2 to 3 micrometer, it means very minute particle. So कौन सा वाला हम टेक्निक्स यूज करेंगे टू फिल्ट्रेट दैट पार्टिकल्स? देखिए फैब्रिक फिल्टर्स हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि फैब्रिक फिल्टर्स बड़े वाले पार्टिकल के लिए है, बड़े वाले एयर पोल्यूटेंट के लिए। साइक्लोन सेपरेटर इसको थोड़ा होल्ड में रखिए। वेंचुरी स्क्रवर्स सारे ऑटोमोबाइल्स में यूज होता है छोटे पार्टिकल को ये करने के लिए। ओके, सेटलिंग चैम्बर एक्चुअली ग्रेविटेशनल फोर्स की मदद से जो बड़ा बड़ा पार्टिकल है वो सेटल डाउन हो जाता है। सेटलिंग चैम्बर्स एंड फैब्रिक फिल्टर्स को आप रिमूव कर सकते हैं इजीली क्योंकि ये दोनों बड़े बड़े पार्टिकल साइज के लिए suitable है। So fabric filters and settling chambers are suitable for only bigger particles, not very small particles. So very small particles you try to answer option B or C, you choose. Then next question, soil fulvic acid are strong chelators of। देखिए this we already discussed in our soil science MCQ videos, so you can see, you can visit our playlist, it is in description box. तो soil fulvic acid देखिए humic acid, fulvic acid, humin, these all are related things and interchangeable. So you should understand what is soil fulvic acid, what is the role of that we will discuss in next slide. But here strong chelator of, you try to answer. So here you can see the answer is option C, that means scrubber you are using for very minute particles. You can see in automobiles. Okay, in automobiles, truck, bus, auto, etc., we are using scrubbers to filtrate that particular minute particle which is less than 3 micrometer. So you have to remember this. Then we'll discuss about fulvic acid, humic acid and humin. देखिए ये दोनों होता है very important organic compounds in soil. Okay, soil में ये बहुत ज्यादा important रोल प्ले करता है। तो ऑर्गेनिक रेसिड्यूज जब डिकम्पोजिशन होता है, फॉल्विक एसिड फॉर्मेशन होता है, ह्यूमिक एसिड फॉर्मेशन होता है एंड ह्यूमिनी आल्सो फॉर्मेशन होता है। सो ऑर्गेनिक रेसिड्यूज ऑफ फॉर्मेशन होता है दो तरह के, पिगमेंटेड पॉलीमर्स एंड नॉन ह्यूमिक सब्सटेंसेस। तो पिगमेंटेड पॉलीमर्स इज कॉल्ड ह्यूमिक सब्सटेंसेस। यू कैन सी हियर द कलर ऑफ फॉल्विक एसिड लाइट येलो या फिर येलो, but humic acid is a little bit brown color, gray color, and humin is black color. That means if we move from fulvic acid decomposition towards humin decomposition, we will see that that decomposition process as it gradually increased, then the color, the darkness of the color is increased from fulvic acid to humin. So increase in degree of polymerization, you can see here. Increase the intensity of color, yes. As the color or intensity is increasing, so molecular weight also increasing in this way. So it means humin having high molecular weight. Then increase in carbon content, yes, carbon content also increasing. Then decrease in oxygen content. So it means fulvic acid having more oxygen content as compared to humic acid. So you should note it down. Then decrease in degree of solubility. Okay, solubility is higher in humin because it is a stable product. You can see fulvic acid changes to humic acid changes to humin, so it is a stable product and it is black in color. You can see in black soil it is very dominant. So decrease in carboxyl and hydroxyl group. As the solubility increases, so carboxyl and hydroxyl groups are decreasing. So here answer A is the right answer, means Fe2, that means second valence
वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 प्लस यू कैन से, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, आप कुछ भी बोल सकते हैं। सो आयरन का ऐसा फॉर्म होता है, इसके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होता है। ओके, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। द क्वेश्चन इज natural sources of polycyclic aromatic hydrocarbons। इसको नोट कीजिए, polycyclic aromatic hydrocarbons, that means PAH। So where actually PAH comes from? Actually when organic compounds, okay, when organic compounds are burned, जब जलेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड, जब जलेगा जो रेसिड्यूज निकलेगा, ओके, व्हाटएवर विद द लेफ्ट प्रोडक्ट वी कैन से पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, एंड इट्स ए वेरी इंटेंसिव पोल्यूटेंट्स यू कैन से। Okay, so from where we'll get this? You can tell this. The answer is in next slide. Match the phase. Okay, we have to match environmental audit. Okay, environmental impact assessment, environmental audit. These are some basic chapter. जहाँ से एक सवाल हमेशा पूछा जाता है. Okay, these are some basic chapter. So what we should do in pre-audit, what should we do on site audit, and post-audit में क्या करना है? That means you can say it's a very easy. If you don't know also you can attempt, because you can see on site audit, जब हम site घूमेंगे तभी हम records maintain करते हैं. Okay, so on site must be records and document review. Then human input output analysis in relation to economy. That means here we have to analyze human input output. That means it should be comes under post audit. Okay, so C must be 1. That means you can see C1, A, B3, A2. That means option A should be correct answer. Okay. So if you don't know also you can attempt. This is a very easy and very fundamental question. Okay. देखिए प्री ऑडिट के टाइम पे हम पहले जाकर चेकलिस्ट में रिव्यू करेंगे. चेकलिस्ट हम ऐसे बनाते हैं ना, जो टिक मानना है, यस और नो, ऐसे टिक टिक, ये चेकलिस्ट हम बनाते हैं प्री ऑडिट के टाइम पे. ऑन साइट ऑडिट पे हम रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं, जैसे हम प्रैक्टिकल रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं ना, वैसे ऑन साइट ऑडिट पे हमें रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है. उसके बाद पोस्ट ऑडिट में आपको ह्यूमन इनपुट आउटपुट एनालिसिस करना पड़ता है. सो हियर वी कैन सी द आंसर इज ऑप्शन डी, दैट मींस ग्रास फायर. ग्रास फायर से एक्चुअली पॉलीमेटिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, दैट इज PAH एक्चुअली होता है, जनरेट होता है. ओके, so PAH is generated from grass fires. Okay, then that next one, answer A, we already discussed that one, match of the following. Okay, then we have to discuss what is polycyclic aromatic hydrocarbons. देखिए polycyclic aromatic hydrocarbons actually incomplete combustion of organic matter. When organic matter burned incompletely, then we will get polycyclic aromatic hydrocarbons, and it is mutagenic, it is carcinogenic. Okay, बहुत ही ज्यादा डेंजरियस आप मान कर चलिए इसे polycyclic aromatic hydrocarbons. यहाँ पे भी कुछ लिखा गया है, organic compounds containing only carbon and hydrogen that are composed of multiple aromatic rings. Okay, there are many rings are there in polycyclic aromatic. Aromatic means तो rings है ना, aromatic जो pi इलेक्ट्रॉन घूमता है वही तो rings होता है ना. So they are a class of carcinogenic organic molecules that consist of 3 or more benzene rings. Okay, so ये बहुत ही common है when fossil fuel combustion होता है. Okay, fossil fuel combustion से जो रिलीज होता है PAH, ये बहुत ही ज्यादा डेंजरियस है, कार्सिनोजेनिक, म्यूटाजेनिक और बहुत सारे चीजें हैं. So यहाँ से सवाल आया था, आप देख सकते हैं. Here it is written that man contributes polycyclic aromatic hydrocarbons by burning wood and incomplete combustion of fossil fuel. So here we can see forest fire also is a reason. Volcanic eruption is also a reason. Okay, so forest fire and grass fire you can say. The compounds are numerous in fossil fuel such as coal and petroleum. Okay, you can see anthropogenic sources can be divided into 2 categories. The combustible material, coal gas, oil gas, wood, etc. Okay, from here we are getting PAH in a large amount. So what are the impacts of PAH that we should aware of it? Okay, we should know what are the environmental effects. देखिए पहले तो polycyclic aromatic hydrocarbons are carcinogenic in nature. बहुत ही ज्यादा poison आप बोल सकते हैं. High acute toxicity to aquatic life and birds. इसको आप याद रख लीजिए. एंड ये insoluble in water है. Obviously it comes from organic matter ना. Organic matter जब incompletely combustion होता है तभी ये मिलता है, तो ये insoluble तो होगा, but soluble in organic solvents. Okay, soluble in oils,
Then how it comes to mammals or plants, how it comes. So mammals can absorb pH by various routes, maybe inhalation, dermal contact, or ingestion, maximum inhalation, because it is in air. Okay, plant can absorb pH from soil. Obviously soil is the main source of pH. So pH and moderate ये बायो एक्यूमुलेट होता है. सो pH का एक बहुत ही मतलब आप बोल सकते हैं ओर्स नेचर है कि बायो एक्यूमुलेट होता है. तो बायो एक्यूमुलेट होगा, इसका मतलब क्या है, उसका क्वांटिटी स्लोली इंक्रीज होता रहता है. स्लोली या फिर ग्रेजुअली द क्वांटिटी ऑफ pH इंक्रीज्ड इन आवर इकोसिस्टम. सो दैट्स ए thing which we can concern. Okay, so this is our end of the video. If you like this video, please like and subscribe this channel so that you will get more videos in time.